So, hello, bachcho, and welcome once again to the list of important topics. Yeah, important topics we have been discussing for the upper limb, lower limb. Let us now begin with the important topics of abdomen. But a simple request before starting this video, watch this video till the end. Only then all your correlation and concepts and important questions will be cleared. यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाना है आपको एग्जाम्स के लिए. You'll score very good marks. Okay, students, so let us begin with the important questions of abdomen. So first let us begin with the LAQs. अब मैंने बोला आपको अगर एक LAQ आप प्रिपेयर करते हो तो साइमल्टेनियसली 3-4 SAQs are automatically prepared, right? So the first LAQ is the portal vein. पोर्टल वेन के लिए आपको क्या लिखना है? पोर्टल वेन, यू विल बी राइटिंग द फॉर्मेशन ऑफ पोर्टल वेन. वो कैसे बनती है पोर्टल वेन? वेयर इज इट फॉर्म्ड? बिहाइंड द नेक ऑफ द पैनक्रियास बाय द जॉइनिंग ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड स्प्लेनिक वेन. फिर द पोर्टल वेन फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू इट्स टर्मिनेशन, मतलब बिहाइंड द नेक ऑफ पैनक्रियास से लेके टिल द लीवर, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. सुप्राड्यूडनल, रेट्रोड्यूडनल, इंफ्राड्यूडनल पार्ट्स. उसके रिलेशंस आपको लिखना है of all these 3 parts. Very important. Portal vein is extremely important, clinically important question. फिर tributaries of portal vein आपको लिखना है, tributaries of portal vein, and finally you have to write the sites of portasystemic anastomosis. Very important. Portasystemic anastomosis ये clinical oriented MCQ भी आ सकता है. Okay, portasystemic anastomosis. So portal vein is extremely important. Coming to the next, inguinal canal. अब inguinal canal में you have to write about the boundaries, the anterior wall, the posterior wall, the roof floor of the inguinal canal, the openings, the superficial and deep inguinal ring के बारे में लिखना है आपको. You have to write the contents of inguinal canal in males, in females. फिर आपको Hasselbalch's triangle के बारे में लिखना है. Then you have to write about what is a direct and what is an indirect inguinal hernia. And about the direct inguinal hernia, a direct lateral and a direct medial inguinal hernia. ये सब हमने अपने lectures में cover किया है details में बच्चों. So just have a look at those lectures also. So it will be easy for you to correlate. Fine. So clinical correlation में hernia के बारे में लिखना है. इसका clinical questions भी आ सकता है. Now third LAQ is the stomach. Stomach is a very important LAQ. उसके morphology के बारे में लिखना है. Morphology मतलब the surfaces, the borders, the ends. After writing this, you have to write about 2 types of relation, a peritoneal relation and visceral relation. So peritoneal relation में आप लिखोगे less omentum, great omentum, कैसे उसे enclose करता है. Visceral relation में anterior relation, posterior relation, stomach bed के बारे में लिखना है. Stomach bed आपको short note भी आता है, तो stomach bed is a very important short note also. How the structures are separated from the stomach by the lesser sac, वो लिखना है आपको. फिर उसका आर्टेरियल सप्लाई, हाँ, डायग्राम ड्रॉ करना है. वीनस ड्रेनेज ऑफ द स्टमक, लिम्फैटिक ड्रेनेज, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन. हाँ, लिम्फैटिक ड्रेनेज सेपरेट शॉर्ट नोट भी आता है, लिम्फैटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक, बिकॉज कार्सिनोमा स्प्रेड होता है. एंड देन यू हैव टू राइट अबाउट द नर्व सप्लाई एंड क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्टमक. फाइन है, ओके. देन कमिंग टू द duodenum, another extremely important LAQ. ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज अल्सर्स होते हैं ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ duodenum. अगर अल्सर होता है तो द गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी गेट्स इरोडेड, राइट. सो duodenum के 4 पार्ट्स आपको लिखना है. हाँ, लेंथ ऑफ ईच पार्ट्स, whether it's peritoneal or intraperitoneal or retroperitoneal, वो आपको लिखना है. फिर relations of the first part, second part, third part and fourth part separately explain करना है. You have to write about the blood supply of the duodenum, the venous drainage. Duodenum partly derived from the foregut, partly from the midgut, so supplied by both celiac trunk and the superior mesenteric arteries. So उसके exact branches लिखने हैं. Venous drainage of duodenum is very important, right? The nerve supply and the lymphatics. And finally the clinical application, जो अभी मैंने बोला ulcers होता है duodenum पे, posterior wall पे, and if there's an ulcer, the gastroduodenal artery is eroded off. ठीक है. Another extremely important LAQ is the pancreas. Pancreas का आपको head, neck, body, tail, morphology लिखना है. You have to write about the relations of each of this head, neck, body and tail of the pancreas, right?
Then the blood supply, the venous drainage, same, the lymphatic drainage of the pancreas. Embryology of pancreas is another very important structure here. Embryology of the pancreas में आपको development of the dorsal bud, ventral bud, फिर dorsal ventral bud से क्या क्या बनता है, what is annular pancreas, what is pancreatic divisum. I'm sure you must be knowing all these things, right? तो ये लिखना है. And thirdly, pancreas is very important as an LAQ because इसका histology भी तो है. Add a note on histology, microscopic anatomy. तो उसमें आपको exocrine part, endocrine part of pancreas लिखना है. Exocrine part resembles a serous salivary gland. Endocrine part of pancreas is the islets of Langerhans. And islets में वो different type of cells आपको लिखना है. ठीक है? So that's about the pancreas. Then pancreatitis के बारे में आपको लिखना है. Pancreatitis. ठीक है बच्चों? Understanding? Are you if you are understanding, if you are finding it good, इसे जरूर सब्सक्राइब करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना. ठीक है? Then the kidneys, another extremely important LAQ is the kidney. तो किडनी का तो फर्स्ट आप मॉर्फोलॉजी लिखोगे, हाँ, उसके बॉर्डर्स, उसके एंड्स, उसके सर्फेसेस. द कवरिंग्स ऑफ द किडनी, ये इटसेल्फ शॉर्ट नोट आता है. कवरिंग्स ऑफ द किडनीज में द कैप्सूल, द रीनल फेशिया, द पेरिनेफ्रिक पैड ऑफ फैट, द पैरानेफ्रिक पैड ऑफ फैट, the fascia of Gerota, renal fascia, the fascia of Gerota, fascia of Tolt, fascia of Zuckerkandl. कैसे वो fascia upper pole पे join होता है, कैसे ये suprarenal gland को split करके enclose करता है, that you have to write. Kidneys के relations are very important. The posterior relations formed by the posterior abdominal wall, the anterior relation of the right and the left kidneys, extremely important. The right kidney is lower, left is higher. फिर उसका arterial supply, venous drainage, renal segments आपको लिखना है. Microscopic anatomy of the kidney and development of the kidney derived from metanephros, ये आपको लिखना है. Fine. Then kidney stones in the kidney होते हैं, तो posterior approach to the stones of the kidney ये आपको describe करना है. Fine. That's about the kidney. Then coming to the extrahepatic biliary apparatus. बच्चों, extrahepatic biliary apparatus is liver छोड़ के जो भी कुछ है, that is extrahepatic. Extrahepatic मतलब राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स, द कॉमन हिपैटिक डक्ट, फिर यहां से आया सिस्टिक डक्ट, एंड देन फिर बन गया बाइल डक्ट. तो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू एक्सप्लेन. द राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जॉइन टू फॉर्म द कॉमन हिपैटिक डक्ट. फिर गॉल ब्लैडर के बारे में लिखना है, रिलेशंस ऑफ द गॉल ब्लैडर लिखना है. हाँ, वो वॉल है गॉल ब्लैडर में. देन द सिस्टिक डक्ट आपको लिखना है, सिस्टिक डक्ट जॉइनिंग विद द कॉमन हिपैटिक डक्ट to form the common bile duct. फिर relations of common bile duct लिखना है, supraduodenal, retroduodenal, infraduodenal parts. Right? Then cholecystectomy, cholecystitis, cholelithiasis, all this clinical application. ठीक है बच्चों. Then coming to the next, urinary bladder. Urinary bladder is now coming to the pelvis. अपन pelvis में आके urinary bladder is a very important LAQ. Again, morphology में उसके various surfaces आपको लिखने हैं, borders, apex, base. Apex से वो median umbilical ligament, base के relations males and females में क्या होते हैं, that you have to write. You have to write about the peritoneal relations, the visceral relations of the bladder. फिर interior of the bladder, that's very important. वो trigone वाला है ना, trigone वाला structure, ऊपर दो ureters, नीचे urethra, and the trigone of the bladder, which is derived from the mesonephric duct. Rest of the bladder is derived from endoderm. Right? Hind gut divided into a cloaca and urogenital sinus. तो urogenital sinus से बनता है bladder, except trigone which is derived from the mesonephric duct, mesodermal in origin. ठीक है? फिर bladder का फिर the arterial supply, venous drainage, सब कुछ लिखना है आपको, and the clinical application of the bladder. Cystoscopy करोगे तो क्या दिखता है, trigone कैसे दिखता है, interureteric ridge के बारे में आपको explain करना है. Then another very important question is uterus. Uterus morphology लिखना है. What is anteversion? What is anteflexion? The size of the uterus, the length of the uterus, cervix. हाँ, वो सब आपको explain करना है. The parts of the uterus explain करना है. Peritoneal relations, visceral relations of the uterus you have to explain. Dear students. Then again, the various ligaments of the uterus. ये itself short note है. The broad ligament, the Mackendorf's ligament, the transverse cervical ligament, the round ligament, uterosacral, pubocervical, and transverse cervical ligament. Uterosacral, that's the transverse cervical is the Mackendorf's ligament. वो ligaments के बारे में लिखना है. फिर arterial supply, venous drainage,
And then clinical application बहुत ज़्यादा है. Lymphatic drainage of uterus is another very important topic because cancer spread होता है ना. फिर you have to write about the clinical में तो बहुत चीज़ें लिखने जैसे hysterectomy, hysteroscopy है ना, fibroids of the uterus that you can write. And finally prostate, fibromusculoglandular organ के बारे में लिखना है, surrounds the neck of the bladder that you have to write. You have to mention about the various lobes of the prostate, which lobe of prostate is more prone to cancer, which lobe of prostate is more prone to hypertrophy, ये इसके बारे में लिखना है. Prostatic urethra के बारे में explain करना है, हाँ, right? And the openings in the prostatic urethra. Then benign prostatic hypertrophy, cancer of the prostate, what is PSA, prostate specific antigen, that you have to mention. The various capsules of the prostate, true capsule, false capsule, जैसे thyroid का वैसे. So this are the list of LAQs बच्चों. And अगर एक LAQ आप prepare करते हो तो automatically 3-4 SAQs तो हो ही जाते हैं. Right बच्चों, if you're liking this video, subscribe to the channel. You'll get updates about the new videos which are posted. It will be beneficial for you, right? Okay, so that's about the LAQ. अब चलते हैं SAQ की तरफ. बच्चों बहुत 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 important SAQ है rectus sheath. अब वो कैसे बनता है rectus sheath? How we study the rectus sheath in 3 parts: above the xiphoid process, below the xiphoid process, below the costal margin, above the costal margin, below the costal margin, and the line drawn between the umbilicus and pubic symphysis, and finally below the line drawn between the umbilicus and pubic symphysis. Anterior posterior wall के बारे में आपको लिखना है. rectus sheath के contents you have to explain. The rectus abdominis, pyramidalis, the artery, the vein, superior and inferior epigastric arteries के बारे में लिखना है, and the nerves, right? So that's about the rectus sheath. ये MCQs भी काफी आते हैं इसमें. Another very important topic is epiploic foramen. बच्चों उसके boundaries, anterior, posterior, superior, inferior boundaries. Epiploic foramen is also known as the adductus to the lesser sac or the foramen of Winslow. This is very important. ये MCQs में भी आता है. ठीक है. लेसर सैक स्टमक के पीछे होता है. हाउ इज द लेसर सैक फॉर्म? वो रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिटोनियम के बारे में आपको लिखना है. लेसर सैक इज सेपरेट्स द स्टमक फ्रॉम द स्टमक बेड, वो आपको लिखना है. एंड लेसर सैक से ग्रेटर सैक में आने के लिए दैट्स द एपिप्लॉइड फोरामेन. ओके, सो लेसर सैक इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट SAQ. फाइन है बच्चों. इंप्रेशंस ऑन द लीवर. अब lumbar plexus, how the lumbar plexus is formed. And what are the various branches of lumbar plexus? What is lumbosacral trunk? Right? How L4 takes part in the formation of lumbar plexus and sacral plexus. And this lumbar plexus is formed in the substance of psoas major. The various branches of lumbar plexus आपको याद रखने हैं. This can be asked in the vivas also. Right, बच्चों? Now, impressions on the liver. ये viva में भी पूछता है. The various surfaces of the liver आपको याद रखने हैं. The caudate lobe, quadrate lobe, and the relations on the right and the left of the caudate and quadrate lobe. फिर impressions on the visceral surface, impressions on the posterior surface, ये याद रखना है. इसका diagram भी आता है. To draw the diagrams, the ligaments of liver, the bare areas of liver, ये सब पूछते हैं. Spleen का in short you have to write about the dimensions of the spleen, the Harris dictum 3, 5, 7, 9, 10, 11. The weight of the spleen, the various ligaments of the spleen, the gastrosplenic, lienorenal, the phrenicocholic ligament. What is sustanticulum linus? Phrenicocholic ligament is known as sustanticulum linus, right? For the impressions on the spleen, the gastric, the renal, the pancreatic, the diaphragmatic, the cholic impression के बारे में लिखना है. And then some clinical anatomy you can always add to. What is splenectomy? What is splenomegaly? Right? And how the spleen can be ruptured. ये आपको लिखना है. Abdominal aorta and its branches. बच्चों इसमें branches में celiac trunk, very important. It should be on the tip of your tongue. Branches of celiac trunk, branches of superior mesenteric artery, branches of inferior mesenteric artery. This should be very clear, very clear. सारे branches आपको आने चाहिए. ये वाइवास में भी पूछता है, ये MCQs में भी आते हैं. ठीक है. Hystorectal fossa. Another very important topic, the boundaries, the lateral medial wall, which is formed by the anal canal, the roof, the floor, the anterior and the posterior boundary of hystorectal fossa. For the parts of the hystorectal fossa, what is hystoanal space, what is suprategmental space, what is perianal space, ये आपको explain करना है.
फिर द वेरियस फैट, वेर इट इज टाइटली पैक्ड, कहाँ पे लूजली पैक्ड फैट होता है वो लिखना है. एंड देन इसके बहुत सारे क्लिनिकल एप्लीकेशंस है, राइट. व्हाट इज अ फिशर इन एनो, व्हाट इज फिस्टुला इन एनो, व्हाट इज एन हिस्टोरेक्टल एब्सिस, ये आपको लिखना है. एंड द कंटेंट्स ऑफ हिस्टोरेक्टल फोसा, हाँ, द इंफीरियर रेक्टल नर्व्स एंड वेसल्स, द प्यूडेंटल कैनाल, वो लिखना है. सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पाउचेस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे. सुपरफिशियल डीप पेरिनियल पाउचेस के बाउंड्रीज एंड कंटेंट्स, सब कुछ नहीं बट एटलीस्ट द इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मेल्स एंड फीमेल्स में कैसे डिफर करते हैं वो आपको याद रखना है. यू कैन गेट अ शॉर्ट नोट ऑन सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पाउचेस. And finally, levae terrani. Levae terrani, उसके attachments of levae terrani. What is white line of pelvic fascia? Levae terrani के parts, the pubococcygis, the iliococcygeus, the ischiococcygis parts of levae terrani, and the coccygis proper muscle. How the levae terrani separates the pelvis from the perineum. Why it is known as the pelvic diaphragm. एंड उसके क्लिनिकल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है. अगर ये levae terrani वीक हो गया देन प्रोलैप्स हो जाता है ना. ऑल दोस थिंग्स, levae terrani स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, द कीगल एक्सरसाइजेस, उसके बारे में आप बोल सकते हो, उसके बारे में आप लिख सकते हो. So students, I hope I'm clear to all of you about this, the list of important questions. Lecture पूरा देखते रहना so that you get a complete idea of the must know topics. बाकी ये तो must know topics हैं, may know topics or may like to know topics. If you remember, that's well and good. But these topics you have to know. You have to. Okay, so channel, I hope you have liked this. You can always subscribe to it, this channel. Okay. So thank you so much. This is, and look at this. This is my Telegram channel. ये है मेरा Instagram handle. इसमें छोटे छोटे reels, educational reels हम डालते हैं. So that is easy for you. Viva series एक चलाया था इसमें. 30 days Viva challenge चलाया था हमने, जिसमें small Viva type of questions I used to ask the students. And that's my YouTube channel. हाँ, YouTube channel पे important topics in anatomy, in theory topics, important topics from Viva point of view, ये भी मैंने लगाया. अब हम clinical oriented MCQ start करेंगे, clinical based scenario questions start करेंगे. So I hope this will be beneficial for you. देखते रहना. Thank you so much. Thank you once again.